Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class. Student, today date is 29 January 2021 and I am teaching you chapter number 7, Protecting Plants and Animals. So, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video we have completed the book exercises of the chapter and we have completed question number A, tick the correct answer, question number B, fill in the blanks, then question number 3, circle the odd one out. Now student, we are doing question number D, short answer question, and first two questions we have already completed. So let's start with the third question. What are decomposers? How do they benefit the environment? Question number 3. What are decomposers? What are decomposers? How do they benefit the environment? How do they benefit the environment? So student, what are decomposer and how do they benefit the environment? See, decomposer are microorganism. Why we say them microorganism? Because they are very small. We cannot see them with our naked eyes. So they are microorganisms and they feed on dead plants and animals. They feed on dead plants and animals. So they play a very important role in cleaning the environment. They play very important role in cleaning the environment. And they release minerals in the soil and these minerals are used by the plant for their growth. So note down the answer. Decomposers feed on dead plants and animals.
they decay dead matter and release releases minerals. Releases minerals in the environment. Which is absorbed by the plants. For example, bacteria, and fungi. So, student, these decomposer feed on dead plants and animals. Is it clear? They feed on dead plants and animal. In this way, they play a very important role in cleaning the environment. They play a very important role in cleaning the environment. They decay dead matters and releases minerals in the environment or in the soil, you can also say. And after that, what happen? These minerals are absorbed by the plants, and name of the decomposers are bacteria and fungi. You can also take a screenshot also. Now, question number 4. Question number 4. What is environment? What is environment? What is environment? Name the components. What is environment? Name the components of the environment. Name the components of
note down. So student, the surroundings or condition in which living organisms find their food and habitat is called the environment. ठीक है, इन्वायरमेंट वो प्लेस है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स, जो भी जिन वो अडॉप्ट कर लेते हैं उस प्लेस को, ठीक है, वही उनका क्या हो जाता है, हैबिटेट हो जाता है, ठीक है. सो दैट बिकम्स द हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स. और अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है. द सराउंडिंग ऑफ कंडीशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म फाइंड देयर फूड एंड हैबिटेट इज कॉल्ड इट इन्वायरमेंट, ठीक है. और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वहीं रहेगा जहाँ पे उसे फूड मिले. दे गेट इनफ फूड आल्सो एंड इवन दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर एनिमीज आल्सो. उन्हें इनफ फूड भी मिले वहाँ खाने के लिए और वो अपने एनिमीज से प्रोटेक्टेड भी रहें, ठीक है. और जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं बेटा इन्वायरमेंट की, तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड एबायोटिक. Abiotic components includes all the living creatures, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं. सो जितने भी लिविंग और क्रिएचर्स हैं वो सब आएंगे आपके किस में आएंगे बेटा, बायोटिक कंपोनेंट में. एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है. लैंड है, सन लाइट है, एयर है, वाटर है, ये सब क्या हो गए, नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, ठीक है. सो नोट डाउन द आंसर. द सराउंडिंग्स, द सराउंडिंग, द सराउंडिंग और कंडीशन, the surrounding or the surrounding or the conditions or condition the surrounding or condition in which living the surrounding or condition in which living organisms find their food and habitat is called it environment. It's called it environment. And when we are talking about components of environment, then note down the two components of the environment
of the environment are first one biotic component, example biotic component, example human beings, human beings, human beings, plants, human being, plants, animals, and insects. Is it clear? Now abiotic, components, abiotic components, example abiotic component, example water, air, sun, etc. So see student, what is environment? Name the components of the environment. So the surrounding or conditions in which living organisms find their food and habitat is called the environment. Is it clear? So, and the two components of the environment are biotic components, example human beings, plants, animal and insects. Abiotic component, example water, air, sun, etc. So this is the complete answer. You can take a screenshot also. Now question number 5. Question number 5. Why has the government set up national park and sanctuaries? Question number 5. Why has the government set up national parks Why has the government set up national parks and sanctuaries? So, note down the answer.
Now, what is the reason for that government set up national parks and sanctuaries? See student, this happens due to the human activities, because due to increase in population, demand of the things also increase. Is it clear? Due to increase in population, the demand of the things start increasing. So for making land more free for the cultivation and many other activities also, human beings cut lot of trees, and this cutting of trees is known as deforestation. And student, we know that these forests are the natural homes of the wild animals, because these forests provide them food, enough food and shelter also. So these are the natural homes of the wild animals, and due to human activity, that cutting of trees, what's happened? Due to this, many animal extinct or verge to extinct. ह्यूमंस की इस एक्टिविटी की वजह से बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो लुप्त होने लगे हैं. ठीक है, मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत लेस होती गई, क्योंकि जब हमने इतने ज़्यादा फॉरेस्ट कट कर दिए तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे बेटा? वो तो उनके नेचुरल होम है, वहाँ से उन्हें इनफ फूड मिलता था. ठीक है, अब जब इतने फॉरेस्ट कट कर दोगे, उन एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा, देन दे स्टार्ट कमिंग इनटू द विलेजेस एरिया. तो वहाँ पे ह्यूमन बींग्स क्या है, उन्हें किल भी कर देते हैं. तो टू सेव द फॉरेस्टेज, टू सेव द फॉरेस्ट एंड टू सेव द लाइफ ऑफ द एनिमल्स, दिस इज अ रीजन द गवर्नमेंट हैव set up the national park and wildlife sanctuaries. Is it clear? Now note down the answer. Even student, now no one can cut the trees. In all the trees you will see that numbers on the tree, and poaching is also not allowed. आप एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को आप किल नहीं कर सकते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक लॉ बना है, आप अगर ऐसा करते हैं तो यू हैव टू पे द फाइन, और इवन ड्यू टू लॉ यू आर, आप लॉ के अगेंस्ट वर्क करते हो, एनिमल्स को किल करते हो, तो आपको जेल भी हो सकती है. ठीक है, तो फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, प्लांट्स को सेव करने के लिए, बिकॉज प्लांट्स आर आवर लाइफ लाइन, और एनिमल्स की लाइफ को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सेटअप किए हैं. ठीक है, सो नोट डाउन द आंसर. ड्यू टू ह्यूमन बींग्स, many animals extinct, or are on the verge of extinction. Verge of extinction. So the government the government has
started protecting the forest protecting the forest and animals by setting up national park and wildlife sanctuaries. Wildlife sanctuaries cutting of trees cutting of trees cutting of trees and poaching and poaching is not allowed in these areas. For example, Jim. What was the name of the national park? Jim Corbett National Park which was established to protect tigers. See, due to human activities many animal extinct, मतलब उनकी संख्या जो है बहुत कम होने लगी, लुप्त होने लगे, और कुछ तो एकदम खत्म होने के कगार पे आ गए. ठीक है. So the government has started protecting the forest and animals by setting up national park and wildlife sanctuaries. Cutting of trees and poaching. Cutting of trees banned है. अगर आप ऐसा करते हैं, आप लॉ के अगेंस्ट करते हैं. पोचिंग मतलब अब आप वाइल्ड एनिमल्स को उनका शिकार नहीं कर सकते. कटिंग ऑफ ट्रीज एंड पोचिंग इज नॉट अलाउड इन दिस एरिया. फॉर एग्जांपल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच वाज एस्टेब्लिश्ड. इसे क्यों बनाया गया? टू प्रोटेक्ट टाइगर्स. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट.
Okay, thank you student, and next question answer we will continue in the next video.